हो. हो, हो. आके तरफ से जाऊंगी येते तो. आवाज आला म्हणून विचारलं. मलाच म्हणते बैताड आहे का म्हणते.
दोनों काम नहीं करते तो काम करो पूरा करो वरना कहीं ये व्हाट्सएप में फोन कर रही है नाही मग झालं ना पुन्हा काही डबल तिकडे Hi all, good evening. Okay, so let's start now. Is my screen visible to you all? Screen दिख रहा है? Yes, Yes, ma'am. yes, ma'am. Okay. So yesterday we spoke about different types of joins we have in SQL. Okay, what is the basic use of joins? Why do we use joins? Let's just revise it quickly and then we will move ahead with today's topic. Join हम क्यों use करते हैं? दो डेटाबेस टेबल्स को कंबाइन करने के लिए. Correct. So to combine data, data from not only to multiple database tables. Okay, that's why we have different types of joins in SQL. So कौन से joins हमने discuss किए कल? Left join,
Inner join, left join, right join, and full join. Inner join, left join, right one. What does this inner join do? कब यूज करते हैं हम inner joins? कॉमन वैल्यूज फेच करने के लिए। हाँ, जब हमें सिर्फ ऐसा डेटा चाहिए जो सारे टेबल्स में अवेलेबल है. If we want to fetch the data which is common between all the tables we are joining, we will have to use this inner join operation. What is the use of left join? Left join क्या करता है? Common as well as left side, left table. Common data from Inner join plus remaining from your right join, right table. लेफ्ट टेबल, लेफ्ट जॉइन. ओके, तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, नाम में ही इसका मतलब है. ठीक है, लेफ्ट जॉइन मतलब योर लेफ्ट टेबल विल गेट द प्रायोरिटी. आपको लेफ्ट टेबल में वो सब कुछ मिलेगा जिनके लिए मैच है, वो डेटा आप रीड कर पाओगे. जिसके लिए मैच नहीं है, डेटाबेस विल रिटर्न null. So if you are performing left join operation, you can write anything. Okay, everything from left table and matching data from right table. या फिर आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, that is inner join plus remaining records from left table. Okay, so that is your left join operation. Next हमने देखा this right join which is opposite of left join operation. So here you will get everything from your right table and matching data from left table. So this is ultimately nothing but the inner join plus remaining records from right table. And lastly we saw this full join which is right join union left join. Okay, so these all types of joins we discussed yesterday. We saw how to join two tables and we also saw how to join more than two tables. Okay, now there is a concept of self join in SQL. Okay, so what does its name suggest? Self join matlab joining a table with itself. एक टेबल को उसी के साथ ज्वाइन करना. Now you might think why do we need to do that? क्योंकि ज्वाइन का मतलब ही हमने क्या समझा है कि अगर हमें मल्टीपल टेबल से डेटा रीड करना है तो ही वी हैव टू ज्वाइन दोस टेबल्स. Why do we need to join a table with itself? So there might be a chance your data is saved in such a way that you have to join that table with itself. कुछ आउटपुट फेच करने के लिए, कुछ इंफॉर्मेशन फेच करने के लिए हो सकता है कि आपको एक टेबल को उसी के साथ ज्वाइन करना पड़े. Okay, so if you see this family table here, so this table contains the information of all the family members. So when we say all the family members, there can be few children, few parent and few grandparent. Everybody will be the member of the family, right? Abhi, so this is the member ID, this is their name, age and this is the parent ID. So F1 का parent है F5. तो अभी F5 का नाम हमें जानना है. If we have to find out who is parent of David, where should we go? F5 का नाम कौन सी टेबल में प्रेजेंट है यहाँ पे? सेम टेबल में, that is this
मरियम, करेक्ट। तो हमें क्या करना है, F1 का पेरेंट इज F5, उसका नाम और एज फेच करना है। सो इफ F7 का पेरेंट इज F4, व्हाट्स हिज नेम, जॉनसन, उसकी एज 36। सो व्हाट इज आवर रिक्वायरमेंट हियर इज टू फेच अ चाइल्ड नेम, एज, चाइल्ड का एज, along with his or her parent name and age। चाइल्ड का नाम, उसकी एज, उसके पेरेंट का नाम और उनकी एज हमें फेच करनी है। एंड ऑल ऑफ दैट इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन दिस सिंगल टेबल। नाउ what exactly we do when we say self join is, this is as good as just creating a replica of the same table with a different name। एक ही टेबल का आप कॉपी बस बना रहे हो यहाँ पे। Okay, so this table we can refer as child table, and this table we can refer as parent table। Okay, so what we have to do is, if this is your child, this is the child of the family, his name is David, his age is 4, his parent ID is 55, and his or her name is Mariam, whose age is 40। तो हमें क्या करना है, we want to check for these parent IDs in the member ID column, and if you get a match, so if this parent ID of child table is matching with the member ID of your parent table, we need to fetch a name and the age। So here we need to join a table with itself। इसीलिए okay, let's just have, we will write our select statement later। So select from family, so we have to give a different name to this table। So it is mandatory to give an alias to the table names in case of self join operation। Okay, family P join the same table with different name, that is, let's say C। So this is your what we can say parent copy of the same table, and this is the child copy of the same table again। So if you don't give these aliases here, database will give you an error, because database will not understand कि आपको ये क्यों join करना है। Because for the database, the joins are only to combine the data from multiple tables, and that's why we need to specify that this particular table, I want to treat this particular table as two different tables for this instance of query। Okay, and now what would be our joining condition, हमें क्या करना है, इस parent ID को इस table की member ID में check करना है। So what would be our joining condition, that is child का जो भी parent ID है, that we need to check in family table का member ID column। Okay, and what all things we have to P fetch? dot member ID। हमें क्या fetch करना है, पहले C dot child का नाम चाहिए तो C dot F name, उसकी age चाहिए तो C dot age, नेक्स्ट कॉलम हमें क्या चाहिए, पेरेंट का नाम, तो P dot F name and then P dot age। So this query will help you get this data। So if you see David, उसकी एज है 4, उसकी पेरेंट का नाम है मरियम, her age is 40। So basically Mariam has 3 children and
their ages are 4, 10 and 12 respectively, and her age itself is 40. And we do have a grandparent here in the family member जो कि मरियम के पेरेंट्स है, तो her age is 40, her parents are Stewart and age is 70. So if your data is saved in such a way and you have to get an information something like this, we have to perform a self join operation. तो self join मतलब है एक ही टेबल की किन्हीं दो कॉलम्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करना. जब हमने जो भी जॉइंस क्वेरीज अभी तक लिखी हैं उसमें हमने दो अलग अलग टेबल की कॉलम वैल्यूज को कंपेयर किया, बट हमने यहाँ पे क्या किया, वी कंपेयर्ड टू कॉलम्स ऑफ द सेम टेबल because that's what was our requirement. Okay, so there are again few chances you will be performing a self join operation. It can be a tricky question just to check your knowledge on the joins in interviews, but actually self join हम बहुत rarely implement करते हैं. Okay, but that's the whole concept of self join you have. And इस केस में कोई भी कॉलम के साथ आप अगर टेबल का नाम नहीं लिखते हैं तो यू विल गेट एन एम्बिग्विटी एरर, क्योंकि अगेन all these columns are present in this table as well as this table. ओके, तो इस केस में सारे कॉलम्स के साथ टेबल का नाम लिखना मैंडेटरी है. ओके, सो दैट्स वेयर वी आर डन विद द जॉइंस. नाउ मैम अगर पूछते हैं टाइप्स ऑफ जॉइन तो हमें 5 टाइप्स है ऐसा बोलना है ना, इंक्लूडिंग सेल्फ जॉइन. या यू कैन से दैट प्रीवियस 4 एंड yes. So there are actually like other types of joins are also there, but you can just specify these 5. These are like very important. Okay, so you can specify that there are 5 joins. Okay, so next concept we have to discuss is subqueries in SQL. Now, what exactly we understand by a subquery? So in simple words, it is just a query within query. Okay, so if in any case you have to enclose a select within select, ऐसी कोई query आपको लिखनी है, so these types of queries are referred as subqueries, जहाँ पे this is your inner query, so this can be referred as the outer query, and this entire thing will combinedly be referred as a subquery. Okay, now where we might have to write these kinds of queries. Okay, where we need to use repeatedly these values from that table. Like if there is a requirement, dynamic changes. हाँ, डायनामिक, अगर आपको क्वेरी को डायनामिकली लिखना है, यू डू नॉट वांट टू हार्ड कोड एनी वैल्यू, you have to write these sub queries. Okay, so let's say I need the details of an employee earning max salary. Okay, हमें क्या फेच करना है, ऐसे एम्प्लॉय के डिटेल्स चाहिए जो मैक्सिमम सैलरी अर्न करते हो. So what exactly we need to know? What is the maximum salary value you have in your table? Which is 11,000. राइट, अभी तक जितना सीखा है उसके बेसिस पे अगर ये चाहिए हमें आउटपुट, तो हम क्या क्या क्वेरीज लिखते हैं. फर्स्ट वी विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द मैक्सिमम सैलरी वैल्यू, एंड देन वी विल यूज दैट मैक्सिमम सैलरी इन आवर where condition like this, that is select star from employee where your salary is equals to 11,000.
Okay, so this query is giving you the details of an employee earning maximum salary. Now what if I'll run this query after an increment cycle? So your salary values have been changed in the table, और उसके बाद अगर आप ये वाला query run कर रहे हो, will it still give you the details of an employee earning max salary at that point in time? मिलेंगे क्या? No, ma'am. No, right? You won't get the details of an employee earning max salary at that point in time with the help of this query, क्योंकि इस query से हमेशा जब भी आप ये query run करोगे तो आपको ऐसे एम्प्लॉय के डिटेल्स मिलेंगे जिसकी सैलरी 11,000 है. This won't give you the details of an employee earning max salary. It might be the case कि उस टाइम पे maximum salary value is 20,000 now, right? So to make your query a dynamic query, instead of hard coding this salary value, ये जो 11,000 हमने यहाँ पे हार्ड कोड किया है उसकी जगह व्हाट डू वी वांट टू कैलकुलेट इज दिस मैक्सिमम सैलरी, ताकि क्या हो, हर बार जब आप ये क्वेरी रन करो this maximum salary should get calculated at that point and then this should be passed as a input to your where condition. Okay, now you cannot use aggregate functions like this. What is the error we are getting? Invalid use of group function. Aggregate functions को आप ऐसे use नहीं कर सकते. So how to do it is by adding this inner query here, which will help you fetch this maximum salary. So select max of salary from employee table. Okay, so this query, whenever you will run, this inner query will calculate the maximum salary amount at that point, and then whatever is the output of this will be passed as the input to the where condition of this outer query here, and you will always get the details of an employee earning maximum salary. ओके, तो अभी ये वाला क्वेरी आप कभी भी किसी भी टाइम पे रन करिए. दिस इनर क्वेरी विल कैलकुलेट यू द मैक्सिमम सैलरी एंड देन दिस वेयर कंडीशन विल हेल्प यू, दिस आउटर क्वेरी विल हेल्प यू गेट द डिटेल्स ऑफ एन एम्प्लॉय where your salary value is the maximum salary value at that point. So in such scenarios, we have to write subqueries. These kind of queries are called as subqueries. Okay. मैम हाँ फिर से एक बार रिपीट कीजिए. हाँ ओके ओके, अभी हमें ओके स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे. ओके, हमारा रिक्वायरमेंट क्या था, हमें ऐसे एम्प्लॉइज के डिटेल्स चाहिए, वो पूरा रो चाहिए जहां पे सैलरी का वैल्यू जो है वो मैक्सिमम सैलरी हो पूरे टेबल का. ओके, तो फॉरगेट अबाउट दीज सब क्वेरीज एज ऑफ नाउ. अगर ये वाला हमारा रिक्वायरमेंट होता तो हम क्या क्वेरीज लिखते, हमें पहले तो पता करना है कि मैक्सिमम सैलरी वैल्यू क्या है. हाउ विल यू डू दैट? विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेरी सिलेक्ट मैक्स ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय. तो हमें ये वाली वैल्यू मिल गई, 11,000 इज द मैक्सिमम सैलरी वैल्यू. अभी हमें क्या चाहिए, ऐसे सारे रोज चाहिए बेसिकली जहां पे आपकी सैलरी का वैल्यू 11,000 है. तो हमें क्या क्वेरी लिखना पड़ा, सिलेक्ट स्टार एंड what do we want to have in the output, that is all the details of your employee. That is why select star from your employee table whose salary is 11,000. So what did we get here? So this is your employee 124 is his ID, name is Dheeraj. He works in IT department and he is earning the maximum salary in your company
बट एट दैट पॉइंट एंड टाइम, जब आपने ये क्वेरी लिखा और रन किया, उस टाइम पे जो भी टेबल में डेटा सेव था, उसके अकॉर्डिंग योर मैक्सिमम सैलरी इज 11,000 और उसी के डिटेल्स हमने यहाँ पे फेच किए. ओके, दिस मच इज क्लियर. Okay. Yes, बट ma'am. अभी ये वाला क्वेरी, मान लो ऑब्वियसली सैलरीज तो सेम नहीं रहने वाली है सालों साल. यू विल गेट योर इंक्रीमेंट्स आफ्टर 6 months, आफ्टर अ ईयर, वट एवर इज द साइकिल ऑफ दैट कंपनी. तो सैलरी वैल्यूज आर गोइंग टू गेट चेंज्ड. तो आपकी वो टेबल अपडेट होने वाली है, करेक्ट? Yes, ma'am. तो वो टेबल अपडेट होने के बाद भी अगर आप ये वाला क्वेरी रन करोगे तो आपको फिर भी मैक्सिमम सैलरी अर्न करने वाले एम्प्लॉयज की डिटेल्स मिलेंगी क्या? नो. This query will give you the details of an employee earning 11,000, not the maximum salary at that point. Correct? Yes, तो ma'am. फिर से वो पॉइंट पे हमें मैक्स सैलरी अर्न करने वाले एम्प्लॉय के डिटेल्स चाहिए, तो ये दोनों क्वेरीज लिखना पड़ेगा फिर से. But if you do not want to write these queries again and again, और दो अलग क्वेरीज नहीं लिखनी है to get this output, हम क्या कर सकते हैं? हमने बस यहाँ पे क्या किया है, if you actually understand here, this is our normal select query, select star from employee, and we are just adding a where condition. बट अभी हमारी कंडीशन क्या है कि आपका सैलरी जो है वो मैक्सिमम सैलरी होना चाहिए. बट नाउ एज वी नो, यू कैन नॉट मेक यूज ऑफ एग्रीगेट फंक्शंस डायरेक्टली दिस वे. आप ये लिख सकते हो सैलरी इज इक्वल्स टू 5,000, ग्रेटर देन, लेस देन, ऑल दीज वेयर कंडीशंस आर पॉसिबल. बट यू कैन नॉट गिव मैक्स ऑफ सैलरी डायरेक्टली यहाँ पे. तो उसके लिए what you have to do is, whatever the query we have written to get that maximum salary, ये जो क्वेरी हमने लिखा है मैक्स सैलरी कैलकुलेट करने के लिए, that entire query you have to put here in place of this hard coded value. 11,000 की जगह यहाँ पे हमें क्वेरी ही लिख देंगे जो कि हमारे लिए मैक्सिमम सैलरी कैलकुलेट कर रही है. एंड देन इस क्वेरी का जो भी आउटपुट है वो हम यूज करेंगे in a where condition of this outer query. So now whenever you will run this particular query, you do not have to modify this query again and again because we are not hard coding anything here. अभी ये क्वेरी आप कोई भी टाइम पे रन करो, उस टाइम पे उस टेबल में जो भी मैक्स सैलरी अमाउंट है, दैट मैक्स सैलरी विल बी कैलकुलेटेड, और वो जो आउटपुट हमें मिला है वो हम यहाँ पे एज इनपुट यूज कर सकते हैं. सो इन दिस केस वी डू नॉट हैव टू राइट दीज क्वेरीज अगेन एंड अगेन. वी डू नॉट हैव टू एक्चुअली राइट मल्टीपल क्वेरीज as well as we do not have to modify it again and again. So anyone can simply take this query, run it at any point in time and get the details of an employee earning maximum salary. So here we are. So this is your static query. Static query का मतलब है कि हम आप कोई वैल्यू को हार्ड कोड कर रहे हो, and this is your dynamic query. So basically you can take it as we are passing a parameter. ऐसा आप इसको consider कर सकते हो. You are not hard coding a value, you are taking the inputs from database. ओके आप कोई वेरिएबल डिफाइन करते हो, राइट? सो देयर आर टू वेज. आप खुद उस वेरिएबल को वैल्यू देते हो या फिर यू टेक एन इनपुट फ्रॉम द यूजर, करेक्ट? वैल्यू को सॉरी वेरिएबल को अगर डायरेक्ट वैल्यू देना, दैट इज दिस केस, यू आर मेकिंग दैट वेरिएबल दैट वैल्यू अ स्टैटिक वैल्यू. बट अगर आप यूजर से इनपुट ले रहे हो, दैट इज समथिंग डायनामिक. यहाँ पे हम वही कर रहे हैं. वी आर कैलकुलेटिंग दिस इनपुट फ्रॉम द डेटाबेस इटसेल्फ, and then whatever is the output we are getting, we are passing it to the where condition of the outer query. समझ में आया अभी? And that is what happens in case of subqueries, scalar subqueries. So this is
a type of subqueries we have जहां पे, so what type of subqueries are called as scalar subqueries is wherever your inner query returns a single value. So if you see, this is our inner query and what value it is returning, how many values it is returning, it is just returning a single value. So wherever this is the case, जहां पे भी inner query आपकी एक ही value को return करें, those type of subqueries are called as scalar subqueries. Okay, now if I have to fetch the second highest salary using max function, okay, मेरी requirement अभी क्या है? So this is the data I have. And इसमें से मुझे second highest salary calculate करना है. So which is that second highest salary value? This one. जानबूझ के इसको descending order में ही लिखा है. तो I want to get this value in my output. But I do not want to use limit. We can use limit clause as everybody knows. But limit use नहीं करना. I want to do it using max function. Can you think of a way we can reach out to this particular value using max function? Very easy. Think a bit and मैम आई लेंगे हम जो कि मैक्स सैलरी से कम हो. Correct. Okay. तो सबसे पहले let's calculate this maximum salary value. Now, what will happen if you'll add an outer query here where you'll say select star from your employee table where salary is less than this maximum salary. So if you look at this particular example, which all values you will get in the output with the help of this query? कौन सी records आएंगी? मैक्सिमम सैलरी से मैक्सिमम सैलरी से कम, हाँ, सारे कम. all these four 80 70 60 50. This will be our result set now. अभी ये जो result set हमें मिला है उसमें से कौन सी वैल्यू हमें fetch करनी है? उसमें से हाईएस्ट वाली करनी अब पड़ेगी. उसमें से मैक्स करना पड़ेगा. उसमें से मैक्स करना पड़ेगा. Correct. Abhi, you can simply replace this star with max of salary here in your outer query. So you will be able to get the second highest salary here using max function. Okay. So you may have this question in an interview. Initial rounds में अगर वो orally पूछते हैं या फिर even if they ask you to write a query quickly, तो भी they may ask you to fetch second highest salary using max function. Okay. And that is asked purposefully to understand if you know about subqueries, क्योंकि we all know limit use करके we do not have to write a subquery. आप straight away second highest या कोई भी nth highest salary easily find out कर सकते हैं. So this is specified because interviewer wants to know if you know about subqueries. Okay. Now if you have to get the details of an employee earning earning this second highest salary, तो क्या करना पड़ेगा हमें? Just to where condition will and put this subqueries. Correct. So just write select star from employee where salary is equals to this second highest salary. So you'll be able to get the details of this employee जो second highest salary earn करता है. So whenever you have a question, any SQL query, try to break that question into parts. जो भी question आपको मिला है उस question को try to break it into parts and write
क्वेरी वन बाय वन, हर एक पार्ट के लिए क्वेरी लिखना स्टार्ट करिए. सो इफ यू सी हियर, getting this inner query is little difficult thing than this outer query. outer में तो हमने सिर्फ select star from our where condition लिखा है. So try to get your inner query first. तो आप जो है required output को जल्दी calculate कर पाएंगे. That is, okay, that's the way we should follow while writing subqueries. I feel it is easy if you do this way. Okay. Now, same way, if we have to get the details of an employee earning fifth highest salary, ऐसे एम्प्लॉइज के डिटेल्स हमें फेच करने हैं जो फिफ्थ हाईएस्ट सैलरी अर्न करता हो. सो इफ वी हैव टू राइट द पार्ट्स ऑफ दिस क्वेरी, वो पार्ट्स क्या होंगे, हमें क्या करना है, पहले तो हमें फिफ्थ हाईएस्ट सैलरी कैलकुलेट करनी है, एंड देन वी वांट टू फेच अ रो वेयर salary is equals to above salary, correct? So how will you calculate this fifth highest salary? First of all, select, क्या query लिखा था हमने फिफ्थ या nth highest salary calculate करने के लिए? Limit n-1, 1. हाँ, sorry, select distinct of salary from your employee table, order by salary BESC, एंड लिमिट में अभी वैल्यूज क्या आएंगे अगर आपको फिफ्थ हाईएस्ट कैलकुलेट करना है तो 4,1. so this will give you the fifth highest salary of the table. अभी ऐसे सारे एम्प्लॉइज का डेटा हमें चाहिए जिनका सैलरी 6,500 है, तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, we will add an outer query here where we will say select star from employee where your salary is equals to this fifth highest salary. These are the three employees who are earning the fifth highest salary from your table, from in your company. Okay. Now, if my requirement is to fetch name and salary of an employee whose salary is greater than average salary of all employees. Okay. ऐसे एम्प्लॉय का नाम और सैलरी वैल्यू फेच करनी है जिसकी सैलरी जो है सारे एम्प्लॉयज के एवरेज सैलरी से ज्यादा हो. What can be our query to get this output here? In where we have to give a subquery saying an average salary greater than. Okay. तो सबसे पहले इस क्वेरी के पार्ट्स क्या होंगे, सबसे पहले तो हमें एवरेज सैलरी कैलकुलेट करना है सारे एम्प्लॉयज का, एंड देन वी नीड टू फेच अ रो बाय नेम और सैलरी जो भी है, फेच अ रो वेयर सैलरी इज greater than above salary. Okay, so how will you calculate the average of salaries? That is by using this aggregate function from employee. और अभी हमें क्या चाहिए, ऐसे सारे employees चाहिए from this employee table where salary is greater than this average salary. Okay, so you'll get only the employees जिनका salary जो है average salary से कम है यहाँ पे. Now if I go to this employee data table we have, and my requirement is to fetch the list of employees from department 30 whose salary is less than average salary of department 20 employees.
if we have to write the parts of this query, what will be those parts? पहले तो एवरेज एवरेज सैलरी 20 एम्प्लॉइज की एवरेज सैलरी कैलकुलेट एवरेज सैलरी ऑफ डिपार्टमेंट 20 एम्प्लॉइज, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. देन वी हैव टू कंपेयर सैलरी ऑफ डिपार्टमेंट 30 एम्प्लॉइज विथ above output. So how to get the average salary of department 20 employees? That is, select average of salary from your employee table where department ID is equals to 20. Employee data it should be. Okay, so this is the average of department 20 employees. Average salary of department 20 employees. अभी हमें इसे compare किसके साथ करना है? Select everything from this employee data table where salary is less than this average salary. सैलरी का स्पेलिंग गलत हुआ. एंड करना पड़ेगा ना मैडम सैलरी. Okay, now if you write this query, what is the output? Which all employees we are getting in the output here? All the employees. We are not checking on the departments yet. हमने सिर्फ क्या चेक किया? सैलरी पे हमने कंडीशन लगाया और जो होना चाहिए इस एवरेज सैलरी से कम होना चाहिए. बट व्हाट डू वी वांटेड टू हैव इज ओनली द लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट 30 एम्प्लॉइज जिनका सैलरी इस सैलरी से लेस हो. So what do we have to do is we have to add one more where condition here, which will be where department ID is equals to 30. So this will give you the list of department 30 employees जिनका salary इस salary से less है. Yes, anyone wants to say anything? Okay. Okay, before I forget, सर ने कल बोला था कि डे आफ्टर टुमारो विल बी आवर लास्ट एसक्यूएल क्लास, तो उसके बाद AWS का सेशन होने वाला है. तो इज एवरीवन ओके विद द टाइमिंग दैट इज 7:30 आई बिलीव. किसी को याद है क्या सर ने क्या टाइम बोला था एग्जैक्टली? 7:30 to 9 ना? 7 to 8:30. 7 to 8:30. हाँ. If anyone have any concerns उस टाइम के लिए? मैम MongoDB NoSQL था ना उसमें? हाँ, हम लोग अभी कल we will learn about अपना window functions and day after tomorrow we will talk about MongoDB. ठीक है, one session is enough for MongoDB. We will just discuss about CRUD operations there. ठीक है, so I hope everyone is okay with that timing. Yesterday, sir was here, but I think many of you had already left from the class. So yeah, ठीक है, I'll convey him the same. टाइमिंग चेंज हो रही है मैडम? मतलब क्लास की टाइमिंग चेंज हो रही है क्या? नहीं, not for all the classes, सिर्फ AWS के लिए. शायद वो सर की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग they want to take it from 7 to 8:30. हेलो मैडम, वो मॉर्निंग है कि इवनिंग है? इवनिंग ही है. क्लास कौन लेंगे? I guess this Sridhar sir. ठीक है. Okay then. Next, let's move on to the next query. So these all are the examples of scalar subqueries. क्योंकि अगर आपने ऑब्जर्व किया है आपकी इनर क्वेरी हमेशा सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न कर रही है. One more we will try to write on the movies table we have, and what I want to fetch is ऐसे मूवी का नाम which was made
using minimum budget, but it generated maximum revenue. ऐसे मूवी का नाम हमें फेच करना है जिसे बनाने के लिए तो हमने मिनिमम बजट यूज किया, बट इट जनरेटेड अ मैक्सिमम रेवेन्यू. सो हाउ विल यू गेट टू दिस आउटपुट हियर? सो व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव टू कैलकुलेट? सबसे पहले तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? मिनिमम बजट. Next thing we have to calculate is your max revenue, and then we want to fetch a movie name, a row satisfying both above conditions. Sorry. Okay, to select minimum of budget from this movie's table. This is the minimum budget. मैक्स रेवेन्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिलेक्ट मैक्स ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम मूवीज. ओके, तो अभी हमें ऐसे मूवी का नाम चाहिए, ऐसा रो चाहिए टेबल का. तो सिलेक्ट मूवी नेम फ्रॉम योर मूवीज टेबल वेयर budget is equals to this minimum budget, and revenue is equals to this maximum revenue. सिंपल. अबोव क्वेरी में दो वेयर कंडीशंस थी, एक डायरेक्ट वैल्यू था और एक हमारा सब क्वेरी था. बट इन दिस केस व्हाट वी आर डूइंग, दो वेयर कंडीशंस है और दोनों ही के लिए हमने सब क्वेरीज यूज करी है. नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस एंड सी व्हाट्स द आउटपुट वी आर गेटिंग. वी आर गेटिंग 0 रिकॉर्ड्स. नाउ व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब क्या हुआ? इस क्वेरी के आउटपुट में अगर 0 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं उसका मतलब क्या हुआ? मूवी ही नहीं थी जिसका बजट कम है, उसको मैक्सिमम रेवेन्यू नहीं कलेक्ट किया. Correct. ज्यादा रेवेन्यू के हिसाब कोई मूवी नहीं. If you have to see which is the movie with minimum budget, so we can say select star from this movies table where budget is equals to this minimum budget. So this is the movie वारे वा दुनिया which was made using minimum budget. और अगर आप मैक्स रेवेन्यू वाली मूवी का नाम देखेंगे, select star from movies where revenue is equals to this max revenue. This is Mohenjo-daro. Okay, so there are two different movies. एक है आपकी मिनिमम बजट वाली मूवी और दूसरी है आपकी मैक्स रेवेन्यू वाली मूवी, एंड दैट्स व्हाई वी गॉट 0 रिकॉर्ड्स इन द आउटपुट ऑफ दिस क्वेरी. अभी दोनों का नाम चाहिए और just having or in place of and. यस. तो क्या करना पड़ेगा? एंड को वी हैव टू रिप्लेस विथ आर. So we will get both the movie names here. Okay. Now, if my requirement, okay, so we do have these two tables. Let's write one more query. We do have this student table and we have this course table. So which all roll number values are there in this student table? 101, 2, 103, 104 and 105. कोर्स टेबल में कौन सी वैल्यूज हैं? 101, 2, 103 and 105. Okay, so these are the roll number values we have in these two tables. Now if I have 6 and 7 mm. अच्छा हाँ, sorry 6 और 7. Okay, so these are the roll number values we have in these two tables. ठीक है, और अभी मेरा requirement क्या है? I want to fetch roll numbers from student which are not there in course table. स्टूडेंट टेबल के ऐसे रोल नंबर्स हमें फेच करने हैं जो आपके कोर्स टेबल में प्रेजेंट नहीं है.
सो नॉर्मल क्वेरी अगर लिखना है तो हम क्या लिखते? सिलेक्ट रोल नंबर फ्रॉम योर स्टूडेंट टेबल वेयर roll number not in with all values 101, 102, 106 and 107. करेक्ट, हमें यही चाहिए। स्टूडेंट टेबल की ऐसी रोल नंबर्स जो इस कोर्स में प्रेजेंट नहीं है, जो इस लिस्ट में नहीं है, which is this 101, 2, 6 and 7. So you'll get these all roll numbers 3, 4 and 5. Those are not there in the course table. But again, हम यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं? We are hard coding something. We are hard coding a list of values here. So instead of this, हम क्या कर सकते हैं? We can write a query to fetch the roll numbers from the course table and say where roll number not in select roll number from course table. This query will also give you the same output. So again, this is your static query जहाँ पे हमने roll number values को hard code किया है, and this is your dynamic query. Okay. Now, if I have to again, and if you observe here in this case, how many values your inner query is returning? Is it a single value? It's All values. multiple values, and whenever your inner query returns more than one value, those type of subqueries are called as multi-row subqueries. So your inner query returns more than one value. So those are referred as multi-row subqueries. Now let's try one more query here. हमें ऐसे मूवी का नाम चाहिए, उसका जॉनर चाहिए, स्टार रेटिंग चाहिए, which has star rating is equals to max star rating of either of the genres. ओके, सो बेसिकली मुझे यहाँ पे मेरा रिक्वायरमेंट क्या है? ऐसे मूवी का नाम फेच करना है, जॉनर और स्टार रेटिंग फेच करना है जिसका स्टार रेटिंग मैच करता हो किसी भी जॉनर की मैक्स स्टार रेटिंग के साथ। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कोई एक, जितने भी सारे मूवीज हैं हमारे पास, उन मूवीज का स्टार रेटिंग वैल्यू सारे ही जॉनर्स की मैक्स स्टार रेटिंग के साथ कंपेयर करेंगे। सो इफ यू हैव, okay, first of all, okay, for example, you have like multiple genres in the table, let's say 5, और उन सब का हर एक जॉनर का मैक्स स्टार रेटिंग है, एक का है 9.0, so second is 8.9, 9.4, 9.2 and 8.5. ओके, तो हमें सिर्फ ऐसा मूवी चाहिए जिसका स्टार रेटिंग इज आइदर ऑफ दीज स्टार रेटिंग वैल्यूज। तो अगर इसका स्टार रेटिंग, इस मूवी का स्टार रेटिंग 8.5 है तो ही मुझे वो आउटपुट में देखना है। It won't be there in the output if it is star rating is 8.8. Okay, because that's not there in this list. Okay, तो सबसे पहले what we have to calculate is max star ratings for each genres here. How to calculate it? हर एक genre के लिए max star rating कैसे calculate करेंगे? Group by function using genre. Yes, group by use करना पड़ेगा. So if you say select max of star rating from your movies table and say group by genre. So these all are the max star ratings for each genres we have.
और अभी हमें क्या करना है, वी वांट टू फेच अ मूवी नेम, कॉमा उसकी जॉनर, उसका स्टार रेटिंग वैल्यू फ्रॉम दिस मूवीज टेबल वेयर स्टार रेटिंग, कौन सा ऑपरेटर यहाँ पे यूज करना पड़ेगा अभी हमें, equal to इन, कितने वैल्यूज रिटर्न कर रही है आपकी इन क्वेरी, 5, तो यहाँ पे इन यूज करना पड़ेगा एंड हियर यू नीड टू हैव योर दिस इन क्वेरी, सो स्टार रेटिंग फ्रॉम मूवीज ग्रुप बाय जॉनर, so you will get all the movie names जिनका स्टार रेटिंग इसमें से किसी एक स्टार रेटिंग के साथ मैच करता. So if you see here we have combined group by और आपका सब query का concept. Okay, so you have to practice such scenario based questions, more and more scenario based questions. तो आपका ये वाला अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा कि कौन से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है. Okay, now if I have to fetch the count of records from the output of below query. So if whatever, okay, we have written this union wala query, correct? So we said select star from your table 1, union select star from table 2. So we have some output here. Now I want to calculate the count of records I have got in this output. इस आउटपुट में मेरे कितने रिकॉर्ड्स आए हैं वो काउंट हमें फेच करना है. So how do we fetch the count of records from a single table? उसके लिए हम क्या क्वेरी लिखते हैं, select count of star from your employee table, your table name, any name. तो अभी instead of this table name, what do we have is a query output. इस query output में कितने records आए हैं वो हमें calculate करना है. So what you have to do is you have to add an outer query and say select count of star from this query, and that is why we said that from clause is used to specify your data source, and that data source can be a table, a view or a sub query. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक query output को आपकी from clause में use कर रहे हैं, as a data source use कर रहे हैं. So basically we have created a temporary table, we can say, with the help of data we have between this in this table 1 and table 2. एक टेम्पररी टेबल हमने यहाँ पे क्रिएट किया है और वो जो टेबल है उसमें कितने रिकॉर्ड्स है वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं. नाउ इफ यू एग्जीक्यूट दिस क्वेरी यू गेट एन एरर व्हिच सेज एवरी डिराइव्ड टेबल मस्ट हैव इट्स ओन एलियास. ओके, वी डिस्कस्ड अबाउट एलियासेस इन एसक्यूएल, इज इट? एसक्यूएल में एलियासेस क्या होते हैं वो हमने डिस्कस किया है ना? yes ma'am. Yesterday we discussed. करेक्ट. तो अभी what is the error we are getting is every derived table must have its own alias. इसका मतलब है whenever you use a query in the from clause, when you use a query as a data source, it becomes mandatory to give it a name because database treats it as a derived table. Derived मतलब हमने इस टेबल को क्रिएट किया है, डिराइव किया है यूजिंग द डेटा फ्रॉम दिस टेबल 1 एंड टेबल 2. Okay, so that's not an actual table of your database. This is just for the instance of this query, and now we are trying to calculate the count of records we have got in the output of this query. Okay, same way जो भी join query हमने लिखा था उसके आउटपुट में कितने रिकॉर्ड्स आए हैं वो अगर आपको जानना है तो यू कैन सिंपली ऐड एन आउटर क्वेरी से select count of star
from your join query. Again, you have to give an alias. So these aliases can be anything. I'm just giving you SQ, giving SQ here. SQ stands for subquery, okay, but this can be anything. Now, if you execute this query, what is the error we are getting? Duplicate column name, department ID. Okay, so if you observe the select statement here, department ID column is present twice in the select statement. ओके हमने डिपार्टमेंट को 2 बार रीड किया है, एक आपके एम्प्लॉय टेबल का और एक आपके डिपार्टमेंट टेबल का. ये क्वेरी सिंपली आप रन करोगे तो दैट वोंट गिव यू एनी एरर. यू कैन रीड वन कॉलम मल्टीपल टाइम्स इन योर सिलेक्ट, बट क्योंकि वी आर यूजिंग दिस क्वेरी इन अ फ्रॉम क्लॉज, क्योंकि वी आर यूजिंग इट एज अ डेटा सोर्स, it is being treated as a derived table now. And can we have 2 columns with the same name in a table? Alias, using alias. Just have to give a different name. Yes, you either have to give a different name or you can simply remove it from your select statement. Anything is fine. Okay, department ID 2 बार नहीं चाहिए. You know values are going to remain same. So you can just remove one instance of it. Otherwise, give some other name to this, any of these department IDs. Okay, and that's how you can calculate the count of records you have got in the output of this join query also. So all of these are the examples of your multi-row subquery. Okay. हेलो मैम, Yes. फिर से बताइए. कौन सी बात? ये दोनों भी क्वेरीज? हाँ हाँ ठीक है. ओके, तो सबसे पहले सिंपल ये वाला क्वेरी सबको पता है अभी कि हम एक टेबल का काउंट ऑफ रिकॉर्ड्स चेक करना है तो हम क्या क्वेरी लिखते हैं? काउंट ऑफ स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, करेक्ट? सो दिस इज आवर डेटा सोर्स इन दिस केस, और इस टेबल में कितने रिकॉर्ड्स है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं. बट अभी मेरा रिक्वायरमेंट क्या था? ये जो भी क्वेरी हमने लिखा है उस क्वेरी के आउटपुट में कितने रिकॉर्ड्स आए हैं. सो ये क्वेरी आउटपुट इज माय डेटा सोर्स नाउ, एंड इसीलिए हमने क्या किया? उस क्वेरी को फ्रॉम क्लॉज में ऐड किया. ऊपर जो सारी सब क्वेरीज हमने लिखी हैं, सब क्वेरीज हमने कहाँ पे लिखी? इनर क्वेरी कहाँ पे लिखी? हमने वेयर कंडीशन में लिखा. आपका डेटा सोर्स तभी भी टेबल ही था. We wrote a subquery in a inner query in a where condition, but in this case हमें क्या चाहिए? इस क्वेरी आउटपुट में कितने रिकॉर्ड्स हैं? I want to use this query output as my data source और मुझे जानना है कि उस आउटपुट में कितने रिकॉर्ड्स आए हैं. सो एज अ डेटा सोर्स यूज करना है तो हमें कहाँ पे ऐड करना पड़ेगा क्वेरी को? वी हैव टू ऐड इट इन फ्रॉम क्लॉज. So select count of star from this query. So simple, इन दोनों queries को अगर आप कंपेयर करो तो यहाँ पे टेबल नेम की जगह बस ये डिराइव्ड टेबल है. So this is your actual table, बोल सकते हो डेटाबेस में वो एक्चुअल टेबल है, but this is your derived table. डिराइव करना, किसी चीज को डिराइव करना मतलब क्या होता है? एग्जिस्टिंग डेटा को यूज करके कुछ नया कैलकुलेट करना. जो भी वॉट एवर कैलकुलेटेड कॉलम्स वी सॉ, ऑल ऑफ दोज कॉलम्स कैन बी रेफर्ड एज डिराइव्ड कॉलम्स, डिराइव्ड वैल्यूज, क्योंकि हमने एग्जिस्टिंग डेटा को यूज करके उन्हें डिराइव किया है, कैलकुलेट किया है. सेम वे वी हैव डिराइव्ड दिस टेबल यूजिंग द डेटा ऑफ टेबल 1 एंड टेबल 2. So this is your derived table, and क्योंकि it's a table you have to give it a name, otherwise you will get an error. And this error is self-explanatory. It says every derived table must have its own alias.
डिराइव्ड टेबल का मतलब है जब भी आप फ्रॉम क्लॉज में सिलेक्ट क्वेरी लिखते हैं, दैट विल बी ट्रीटेड एज अ डिराइव्ड टेबल बिकॉज दैट्स योर डेटा सोर्स एट दिस पॉइंट एंड टाइम. ओके, सिर्फ टेबल की जगह क्वेरी आप यूज कर रहे हो और उस क्वेरी के आउटपुट में कितने रिकॉर्ड्स हैं दैट वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट हियर. सेम हमने यहाँ तो पे मैं भी एलियास करते हो तो एज कीवर्ड देने की जरूरत नहीं है यहाँ पे. नो, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया, एलियासिस आप एज कीवर्ड यूज करके भी दे सकते हैं या फिर सिंपली भी नाम दे सकते हैं, कोई एरर नहीं आएगा. So you can either use as keyword या फिर just write a name to it. Okay, I'll keep as here and I'll just have a name here in this query so that you'll be able to understand कि both of these things work. ओके, सेम यहाँ पे यूनियन क्वेरी आउटपुट में जितने कितने रिकॉर्ड्स आए थे वो कैलकुलेट किया था. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो भी ज्वाइन क्वेरी हमने लिखा उस क्वेरी के आउटपुट में कितने रिकॉर्ड्स आए वो कैलकुलेट किया. देन वी गॉट वन मोर एरर in this query which said duplicate column name department id. That is because now again this is being treated as a derived table. और हमें पता है कि एक टेबल में दो कॉलम्स का नाम कभी भी सेम नहीं हो सकता है. सो you can either, if you want to have both of these department IDs here in the select, just give an alias to one of them, some different name to one of them. Otherwise you can just remove it and get the count of records you have got in the output of this join query here. Okay, समझ में आया. फक्त आपण काय करतो इकडे फ्रॉम क्लॉज मध्ये ऍक्च्युअल टेबलच्या ऐवजी क्वेरी लिहितोय. दॅट्स इट. कोणती पण सिलेक्ट क्वेरी तुम्ही इकडे लिहू शकता and you can get the count of records from the output of that select statement. समझ में आया? Yes. Okay, now let's try to write one query here. So this is the data I have, database of some art gallery which has one artist table जहाँ पे आर्टिस्ट का आईडी है, फर्स्ट नेम है एंड लास्ट नेम है. And we do have another table called cells wherein we have cells ID, painting ID, जिस आर्टिस्ट ने वो पेंटिंग बनाया उस आर्टिस्ट का आईडी यहाँ पे एडेड है. जिसने उसको खरीदा, दैट कलेक्टर आईडी इज हियर. एंड वी डू हैव अ सेल्स प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर पेंटिंग. ओके, एंड माय रिक्वायरमेंट इज टू फेच this. My question is to fetch total amount of cells along with the number of paintings sold for each artist with their name. Okay, read the question, look at the data and tell me how can we get to this output. Group by artist ID and some of the cells, and you can use inner join for joining the artist and cells and get the name. Okay, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? So if you have to break this question into parts, first thing हमें कैलकुलेट करनी है total amount of cells and the number of paintings for each artist. How will you calculate that? So these are those two tables. Artist table है आपका, and then you have got this cells table. Okay, तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए क्या क्वेरी लिखना पड़ेगा हमें? सिलेक्ट टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? सम ऑफ सेल्स प्राइस, और क्या चाहिए? नंबर ऑफ पेंटिंग्स. सो दैट विल बी योर काउंट ऑफ painting ID or count of star. Anything will work from your cells table.
What else we will have to add? We'll have to add a group by here. और group by किस basis पे करना पड़ेगा? Artist ID. database. I think we have written this query earlier also. We just have added some part to it. Okay. So this query will give you the number of paintings and the total amount of cells an artist have done in the gallery. अभी क्या चाहिए? इन आर्टिस्ट के नाम चाहिए, वो कहाँ पे प्रेजेंट है? Those are there in your artist table. तो क्या करना पड़ेगा? You have to join this query output with the artist table. So अभी तक जो भी join queries हमने लिखी वहां पे हमने क्या किया? We just joined 2 different tables या फिर 4 different tables को join किया. बट यहाँ पे अभी हमें क्या करना है? एक टेबल और एक derived टेबल को join करना है. So let's just select everything from your artist table. Inner join. Why inner join? क्योंकि हमें सिर्फ ऐसे आर्टिस्ट का डेटा, ऐसे आर्टिस्ट का नाम चाहिए जिन्होंने कुछ ना कुछ सेल किया है. सो अगर सेल किया है तो ही उसका आर्टिस्ट आईडी यहाँ पे रहेगा. सो इफ यू सी वी हैव लाइक 4 डिफरेंट आर्टिस्ट वर्किंग इन द गैलरी, बट दिस पर्टिकुलर आर्टिस्ट उसने कुछ भी सेल नहीं किया, इसलिए हिज आईडी इज नॉट देयर इन द सेल्स टेबल एंड वी डू नॉट वांट टू हैव दैट नेम इन द आउटपुट. हमें सिर्फ जिन्होंने सेल किया है उनका नाम चाहिए. So inner join this derived table as SQ, and then what will be your joining condition is on artist table ka ID, this ID column should be equals to SQ dot artist ID. Okay, so simple. Cells table की जगह SQ एक डिराइव्ड टेबल आप यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं आपकी आर्टिस्ट टेबल के साथ. And now if you see what all columns we are able to get in the output, as we have said star, so we are getting everything from your artist table ID, F name and L name. और फिर this is artist ID, sum of cells price and count of painting ID. That is all the columns of your derived table also. So if you have to have specific columns from this, what you can do is just replace the star with, let's say we will have this artist ID, F name, and then we need to have the sum of sales price or count of painting ID. So you can either have this sum of sales price in your outer select, या फिर you can give an alias to this column as let's say total sales and this as number of paintings, and use these aliases in the outer query here. And this is what we wanted to fetch, right? हमें चाहिए था ऐसे आर्टिस्ट का नाम along with जिन्होंने कुछ ना कुछ सेल किया है और कितने पेंटिंग सेल करके उसने कितना अमाउंट अर्न किया है, and that is all we have calculated here. So we basically have combined 3 concepts to solve this question: group by, subquery और आपका joins. Okay, understood everyone? मैम फिर से एक्सप्लेन करो नहीं. ओके ओके, डेटा समझ में आया? डेटा कैसे सेव है वो समझ में आया? आर्टिस्ट टेबल में सिर्फ आर्टिस्ट का नाम और उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, एंड दिस इज सेल्स टेबल. सेल्स का इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, सेल्स आईडी है, पेंटिंग आईडी, जिस आर्टिस्ट ने वो पेंटिंग बनाया, जिसने खरीदा, और उस पेंटिंग का प्राइस क्या है. ओके, अभी हमें क्या चाहिए था? टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स. सो ओके, बेसिकली हमें क्या चाहिए कि कितने पेंटिंग्स सेल करने के बाद कितना
अमाउंट अर्न किया है हर एक आर्टिस्ट ने. ओके, फर्स्ट पार्ट यही कैलकुलेट करना है. टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स along with the number of paintings sold for each artist. हर एक आर्टिस्ट ने कितने पेंटिंग सेल किए और उसके बाद कितना पैसा अर्न किया. ओके, हाउ विल यू कैलकुलेट इट? सिंपल है. इसके लिए तो क्वेरी हमने पहले भी लिखा था. व्हाट क्वेरी यू विल राइट? सम ऑफ सेल्स प्राइस कॉमा काउंट ऑफ आर फ्रॉम योर सेल्स टेबल ग्रुप बाय artist ID. Okay, so this gives you the data कि artist ID 2 ने 2 paintings sell किए and he have earned 4,800 rupees. Artist ID 1 ने सिर्फ एक painting sell किया and then he earned 300 rupees. Artist ID 3 ने 3 paintings sell किए and then he have earned 4,250 rupees. क्लियर यहाँ तक? ये वाला पार्ट समझ में आया? यस मैम. अभी हमें क्या चाहिए? यस. इसके साथ हमें क्या रीड करना है? इन आर्टिस्ट के नाम चाहिए. करेक्ट? वी डू नॉट हैव दोज नेम्स इन द सेल्स टेबल. वो कहाँ पे है? आर्टिस्ट टेबल में है. तो अभी अगर 2 टेबल्स का डेटा रीड करना है तो क्या करना पड़ेगा? ज्वाइन परफॉर्म करना पड़ेगा. करेक्ट? So we have one table artist. Inner join, क्योंकि सिर्फ इन्हीं आर्टिस्ट का नाम हमें चाहिए 1 2 3. We do not want to have this 4 in the output जिसने कुछ भी सेल नहीं किया. ओके, बट यहाँ पे अगर आप सीधे सीधे सेल्स टेबल को ज्वाइन करते आर्टिस्ट डॉट सेल्स टेबल, तो इवन देन वी कुड गेट टू नो द नेम्स ऑफ आर्टिस्ट्स जिन्होंने कुछ ना कुछ सेल किया है. करेक्ट? इन दोनों टेबल्स में इनर ज्वाइन करते तो हमें कौन से आईडीज मिलती? 1 2 3. और हम सिलेक्ट में बस लिखते आर्टिस्ट डॉट एफ नेम, आर्टिस्ट डॉट एल नेम. सो वी कुड हैव गॉट दैट. बट अभी हमारा रिक्वायरमेंट क्या है? हमें सिर्फ जिन्होंने सेल किया उन आर्टिस्ट का नाम नहीं चाहिए, उसके साथ और 2 चीजें चाहिए जो कि आपका सम ऑफ सेल्स प्राइस है और काउंट ऑफ पेंटिंग आईडी है. तो ये जो 2 वैल्यूज हैं वो आपके एक्चुअल सेल्स टेबल में प्रेजेंट है क्या? वी हैव टू कैलकुलेट देम. सो इंस्टेड ऑफ अ सेल्स टेबल, पूरी सेल्स टेबल की जगह हमने क्या किया? वी क्रिएटेड अ डिराइव्ड टेबल. एक डिराइव्ड टेबल हमने बनाई यूजिंग डेटा फ्रॉम सेल्स टेबल और उससे हमने क्या कैलकुलेट किया? वी कैलकुलेटेड द सम ऑफ सेल्स प्राइस और काउंट ऑफ पेंटिंग आईडी because we wanted to have these values as well in the query output. Okay, and क्योंकि this is as good as using a query as a data source, it is mandatory to give it an alias. नहीं देंगे you will get this error. Every derived table must have its own alias. यहाँ पे आप इसे नाम दे देंगे और अगर आप यहाँ पे बोलते हैं cells dot artist id, you will get an error unknown column cells dot artist id in on clause. Why? Because we are not joining this cells table here. What do we have? What is our table name? SQ. Okay, so here we are joining an actual table with the derived table. And this is your joining condition. यहाँ पे अगर आप sq.artistid लिखते and you remove this artist id from the select तो भी हमें error आता. sq.artistid in on clause unknown column. Why? Because अभी sq table में artist id column है क्या? नहीं है. And that is why we are getting this error. So you have to have this artist ID in select of this table and then we will be able to get this particular output. इसके बाद हमने सिर्फ क्या किया? Instead of selecting everything, we just
try to fetch selected columns. तो this ID, F name are from your artist table. जैसे normally दो tables आप join करते हो तो उन दो tables की कोई भी columns को आप read कर सकते हो, वैसे ही यहाँ पे भी हमने क्या किया, artist का ID और F name read किया and then we thought of reading these two columns from your derived table, sum total sales and number of paintings. That's it. समझ में आया अभी? थोड़ा तो समझ में आया? Yes, no, जिसने भी बोला था रिपीट करने के लिए. थोड़ा बहुत मैडम. ओके, तो एक बार आप आराम से इस क्वेरी को देखिए, पार्ट वाइज इसे लिखने की कोशिश करिए, फिर भी अगर कुछ डाउट है तो वी कैन कनेक्ट, आई मीन पिंग मी एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन. ठीक है, नाउ these all are the examples we saw where we can make use of subqueries in SQL. Now next thing, next concept we have to discuss here are different window functions we have. These functions are also called as analytical functions. Okay. Here also we will write many more subqueries. Okay. But let's just first understand what does window functions mean. So what happens when you write this select max of salary from employee table? अगर हम ऐसा करते हैं, what is the output we get? We get a single value in the output, that is the maximum salary of your table. And then in this case आप कोई भी दूसरा कॉलम जो है यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करवा सकते, because these aggregate functions, your group by returns a single value for the entire group, right? But now what if my requirement is to calculate that max of salary value, but मुझे एक single value output में नहीं चाहिए. Instead, I want to calculate that maximum salary value and display it across all the rows I have in my table. Something like this. I want to see an output like this. This output में मेरे 5 columns हो, पहले 4 which are already there in the table and fifth one is fifth column will have the maximum salary value, so that I can compare this salary value with the maximum salary of the company. I can compare all these salary values with the maximum salary of the company. तो उसके लिए what you have to do is we have to use this max function. Okay, so this is as good as doing this. ठीक है, salary का जैसे हमने 25% calculate किया था, if you have to calculate anything from this employee table, तो ये जो calculation हमने किया है, we can also calculate this 50%, anything, any whatever is your requirement. Okay, सेम वे ये जो भी हमने 2 कॉलम्स कैलकुलेट किए हैं, वैसे ही हमें एक और कॉलम कैलकुलेट करना है, विच इज योर मैक्स ऑफ सैलरी, मैक्सिमम सैलरी वैल्यू हमें यहाँ पे डिस्प्ले करवानी है. नाउ विल वी बी एबल टू एग्जीक्यूट दिस क्वेरी हियर? इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर पाएंगे क्या हम? व्हाट इज द इशू विद दिस क्वेरी? इसका आउटपुट एक ही होगा. नहीं, इसका आउटपुट ही नहीं आएगा ना. इट विल गिव यू एन एग्रीगेशन एरर. क्यों? क्योंकि जब आप एग्रीगेट फंक्शंस यूज करते हो तो आप कोई और कॉलम्स को फेच नहीं कर सकते, करेक्ट? बट as we have to do it now, that's what is our requirement. I want to have all the columns of my table. I do not want to reduce the number of rows. Along with that, I want to calculate this max of salary value and display it as a new column of my output. I need to use it with this over clause.
which is the helping clause being used to what we can say define a window of records. Okay, so over clause क्या करता है? It helps you define a window of records on which you want to calculate this maximum salary value. And now when we say this max of salary from employee table, we are treating entire employee table as a single group. Same way, if I have to treat entire table as a single partition और उस partition के लिए मुझे max salary calculate करना है, so I won't be writing anything in the over clause. This only means I want to calculate this max of salary value and display it over the number of rows I have within this partition. Calculate this maximum salary and display it across the number of rows we have in this partition here. You can give an alias. Okay, let's give alias later from your employee table. And you see, we have not got any error for displaying other columns of your table. And we are also able to calculate this aggregate value, which is max salary value of the table. So 11,000 is the maximum salary value. It is now displayed across all the number of rows you have here. Correct? Now, what is the column name we are getting in the output? That's the entire calculation. जैसे इस case में भी हो रहा है. Sorry, we won't be able to run this query, but अभी जो भी calculations आप लिखते हो, those calculations will be there in the column name. हाँ, as a column name. ठीक है? But अभी we can give an alias to this calculated column यहाँ पे, anything as max of salary if you say, that column name will be displayed, that alias name will be displayed as the column name here. Okay. Abhi, what if I have to calculate this maximum salary for each department we have? हर एक department के लिए max salary calculate करना था, तो हमने क्या query लिखा? Select max of salary from your employee table, group by department name. So we were able to get the maximum salary values from each of the departments we have. But here again, what we are doing, we are getting only one row for each of the groups we have formed. So group by aggregate functions reduces the number of rows in the output, and in this case also group value के अलावा कोई भी value, कोई भी column आप यहाँ पे display नहीं कर पाओगे. You will get an aggregation error. Okay, so to achieve this, but not reducing the number of rows, not getting a single row for the entire group. So an output something like this. तो अगर इस admin department का maximum salary है आपका 5,000, वो सिर्फ इन rows के corresponding display हो. So if this 6,500 is the maximum salary of your finance department, it should be displayed corresponding to only these 4 rows. So if this 8,000 is the maximum salary of HR department, ये सिर्फ इन rows के आगे display हो. If 11,000 is the maximum salary of IT, सिर्फ IT वाले जो records हैं उनके आगे, उन rows के आगे 11,000 display हो. So basically इस case में हम क्या कर रहे थे? We were comparing salaries with the maximum salary of the entire company. Now in this case, what we can do is we can compare the salary values of the employee of the max salary of that particular department. And to achieve this,
we need to use this max function as a window function again. So select everything, calculate this max of salary over. Now we need to define a window of records. We do not want to treat entire table as a single group. We need to divide it into multiple groups, into multiple partitions, and that's where we have this partition by clause here. So partition by किस basis पे data को divide करना है? Department name. So this is as good as this group by. Functionality is same. डेटा को सिर्फ डिवाइड करेगा और जो भी डिविजन्स हमने बनाए हैं उसके लिए दिस एग्रीगेट वैल्यू विल बी कैलकुलेटेड. बट द डिफरेंस बिटवीन these two is when we are using max as a window function, SQL will not reduce the number of rows. सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, जो भी रिजल्ट है, जो भी मैक्स सैलरी वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट रिजल्ट विल बी शोन corresponding to each record you have in your output. Okay, and now from this employee table, to say we will be able to calculate maximum salary for each of the departments we have separately, और वो सिर्फ इन rows के आगे display होगा. So I want to calculate this max of salary and display it over the number of rows I have in these partitions. So admin का max salary सिर्फ इन 4 rows में display होगा, finance का max salary सिर्फ इन 4 rows पे display होगा. Same goes with your HR and IT department. So in this case, what you can do is you can compare your salary with max salary of that particular department. So partition by department name, if you do as difference, let's say, so we will be able to get the difference we have between salary of that employee and the maximum salary of that particular department. Okay, so that's how we can make use of aggregate functions as a window function with the help of this over clause here. Okay, जैसे हमने यहाँ पे मैक्स फंक्शन यूज किया है, वैसे ही बाकी भी एग्रीगेट फंक्शंस आप यूज कर सकते हैं. बट अपार्ट फ्रॉम दीज एग्रीगेट फंक्शंस, we do have special window functions, and one of the important window function we have is this row number. Okay, तो रो नंबर फंक्शन क्या करता है? रो नंबर, जैसे इसका नाम है, इट जस्ट असाइंस अ रो नंबर और सीक्वेंस नंबर टू ईच रो ऑफ द पार्टीशन. होता है इंडेक्स वैल्यूज असाइन हो जाती हैं, राइट? सेम वे जो भी आपकी टेबल है, उन टेबल की रोज को अगर आपको रो नंबर असाइन करना है तो यू कैन मेक यूज ऑफ दिस रो नंबर फंक्शन. सो द सिंटैक्स विल रिमेन ऑलमोस्ट द सेम एज अबव. मैक्स सैलरी की जगह रो नंबर. वी आर नॉट यूजिंग एनी कॉलम वैल्यू टू कैलकुलेट दीज रो नंबर वैल्यूज. हम सिर्फ वो रो है आपकी टेबल में, उसे बस एक नंबर, एक आईडी असाइन कर रहे हैं. सो रो नंबर, and we want to calculate this row number value for the records we have in the entire table, and that's why there won't be anything in your over clause. Let's say as RN from this employee table. Can you see क्या हुआ है? हर एक रो को बस एक रो नंबर यहाँ पे असाइन हो गया है. Same चीज if you have to do it सेपरेटली फॉर ईच ऑफ द डिपार्टमेंट्स. हर एक डिपार्टमेंट के लिए ये रो नंबर वैल्यूज अलग से कैलकुलेट करनी है, तो क्या करना पड़ेगा? सिलेक्ट स्टार, नॉट नेसेसरीली स्टार. ओके, आई एम जस्ट राइटिंग स्टार ओवर हियर जस्ट टू मेक दिस क्वेरी.
look simple and highlight the thing for which we are writing this query. That's these window functions. Okay, तो अभी हम क्या करेंगे, we will calculate these row numbers separately for each of the departments we have. So what we have to do is we have to add the partition by clause and say partition by department name as RN from your employee table. तो क्या होगा, हर एक डिपार्टमेंट के लिए जो है ये रो नंबर वैल्यूज अलग से कैलकुलेट होंगी. सो इफ यू सी एडमिन के सिर्फ 4 रिकॉर्ड्स हैं तो रो नंबर्स आर 1 2 3 4. फाइनेंस के 4 रिकॉर्ड्स है, रो नंबर्स आर 1 2 3 4. HR 1 2 3 4 5 6. IT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, तो हर एक डिपार्टमेंट के लिए दीज रो नंबर वैल्यूज आर कैलकुलेटेड सेपरेटली व्हेन यू ऐड दिस partition by clause here. Understood everyone? Able to follow the basic concept? Yes. Yes. Now, where exactly we might have to use these functions? कहाँ पे जरूरत, किस scenarios में जरूरत पड़ सकती है? So let's take a quick example. हमें क्या अगर या मतलब अभी ये रो नंबर का अगर आगे का कंफ्यूजन है तो कर लीजिए ना ये. Okay. Is it too much for today? I was just thinking we will just take a quick example using this row number and then we will stop. Okay, चलेगा. और मैम ये जो आपके टेबल्स है ना वो थोड़े से सेंड कीजिए ना, मतलब हम प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा हो जाता है. हाँ, कौन से टेबल्स मैंने शेयर नहीं किए वो आप मुझे एक बार पर्सनली पिंग कर दोगे क्या? तो आई जस्ट शेयर देम ऑन द ग्रुप, बिकॉज मैं चेक नहीं कर पाई कि कौन से मैंने ऑलरेडी सेंड किए और कौन से बाकी है. ठीक है, आई थिंक आई हैव शेयर्ड मोस्ट ऑफ देम, बट या ओके. सो लेट्स टेक अ क्विक एग्जांपल. रो नंबर का सिंपल सा फंक्शनैलिटी है, वो सिर्फ हर एक रो को एक रो नंबर असाइन करता है. यू कैन थिंक ऑफ अ डेटा फ्रेम. जब भी आप डेटा फ्रेम क्रिएट करते हो इंडेक्स वैल्यूज असाइन हो जाती है. दैट इज व्हाट वी आर डूइंग विद द हेल्प ऑफ दिस रो नंबर फंक्शन हियर. और यहाँ पे हमने जैसे ही पार्टीशन बाय ऐड किया तो क्या हुआ, हर एक डिपार्टमेंट के लिए, हर एक पार्टीशन के लिए ये रो नंबर वैल्यूज अलग से कैलकुलेट हो. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस रिक्वायरमेंट फर्स्ट. हमें क्या चाहिए, we want to fetch oldest 2 employees from each department we have. Okay, and to say that that's the oldest employee, we will consider the minimum employee ID. कि अगर उसका employee ID सबसे minimum है, that's the oldest employee of the group or the department. Okay, so basically अभी हमारा requirement क्या है, हर एक डिपार्टमेंट में से, सो लेट्स से यू हैव दिस एडमिन डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट के 2 एम्प्लॉइज चाहिए मुझे आउटपुट में, जो कि सबसे पुराने 2 एम्प्लॉइज हैं, जो कि मिनिमम 2 एम्प्लॉय आईडीज हैं. सो विच ऑल 2 मिनिमम एम्प्लॉय आईडीज वी हैव फॉर एडमिन 101 एंड 108. देन यू हैव दिस फाइनेंस डिपार्टमेंट, इसके 2 मिनिमम एम्प्लॉय आईडीज क्या है, 104 एंड 106. सेम फॉर योर HR. HR के 2 मिनिमम एम्प्लॉय आईडीज क्या है, 102 एंड 105. सेम गोज फॉर योर IT डिपार्टमेंट. IT के 2 मिनिमम एम्प्लॉय आईडीज क्या है, 103 एंड 109. सो दिस इज व्हाट इज आवर रिक्वायरमेंट. हमें क्या करना है, हर एक पार्टीशन के हर एक ग्रुप के 2 रिकॉर्ड्स चाहिए. सो इज इट पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ ग्रुप बाय क्लॉज? ग्रुप बाय अगर आप करते हो तो कभी भी एक ग्रुप के 2 रिकॉर्ड्स हमने फेच किए, क्या हम कर पाते हैं क्या? We will just be able to fetch a single value of that group. It can either be a minimum value or maximum or sum or count, any aggregate, but group by will always return a single row for the entire group.
बट अभी हमें क्या करना है, हर एक डिपार्टमेंट के हर एक पार्टीशन के 2 रिकॉर्ड्स हमें आउटपुट में चाहिए. सो इफ यू गो एंड राइट दिस क्वेरी वंस अगेन, या फिर हैव अ लुक एट दिस पर्टिकुलर आउटपुट and think which all records we want to have finally. So these two from your admin department, these two from your finance department, these two from HR, and these first two from IT department. Now if I have to put a filter to get these 8 records only in the output, what condition I can give? What is common between these 8 rows? जो रो नंबर का टेबल ऐड किया उसमें से फर्स्ट और सेकंड लेना पड़ेगा. Correct. So if you see, the common thing between these 8 rows is the row number values. Row number क्या है इन दोनों का? 1 2. इन दोनों का again 1 2. HR के first 2 records देखेंगे 1 2. IT के first 2 records 1 2. So what we will have to do is we have to put a filter on this RN column. Can we use it straight away here in the same query where RN less than equals to less than 3? लेस देन इक्वल्स टू 2 या फिर लेस देन 3, एनीथिंग इज फाइन. बट ऐसा यूज कर सकते हैं क्या? किसी कैलकुलेटेड कॉलम को उसी क्वेरी के वेयर कंडीशन में हम लिख सकते हैं क्या? वी डिस्कस्ड दिस इन यस्टरडेज क्लास. We have to use having for हैविंग लेना पड़ेगा. नो, ओके, हैविंग की कोई जरूरत नहीं है. ओके, द कॉन्सेप्ट हियर इज सिलेक्ट सैलरी, सैलरी प्लस 100 अगर आप यहाँ पे कर रहे हो, and my where condition is where the salary plus 100 should be greater than 5,000. तो आप ऐसा यहाँ पे लिख सकते हो क्या? अगर आपने यहाँ पे कोई एलियास दिया है इसको साल, any name, तो you can you use it this way, साल is 5,000 greater than 5,000, ऐसे यूज कर सकते हैं क्या हम? Or did we discussed about this yesterday? You can put a where condition only on the column which you have in your table. तो ये साल कॉलम आपके एक्चुअल टेबल में है क्या? नहीं है. Right. So one way you can do it is you have to write this entire calculation here. या फिर आपको क्या करना पड़ेगा? जो भी ये नया टेबल आपने बनाया है using the data of employee in which you have only 2 columns, salary and sal, you have to treat that query output as your data source. और वो हम कैसे करेंगे? You have to add an outer query wherein you will say select star. You can also choose to have few columns of the inner query in an outer, not necessarily यहाँ पे star लिखना है, but select star from this query output. बेसिकली अभी आपका डेटा सोर्स क्या है? ये क्वेरी का जो भी आउटपुट आया है वो है. Do we have this RN column in the query output? Do we have RN column in this derived table? We have, Yes. right? We have all the columns of employee along with this RN in this derived table. And now we can put a filter on this RN field to get those 8 records, which are oldest 2 employees from each of these departments. Okay. Now we have got this output correct only because जैसे हमने डेटा को इंसर्ट किया है टेबल में, we have employee IDs in an ascending order. बट अगर ऐसा नहीं होता, कैसे भी रैंडमली डेटा एडेड है, रैंडम एम्प्लॉय आईडीज हैं, तो हमने कहीं पे भी उसका ऑर्डर सेट किया है क्या? वी जस्ट हैव क्रिएटेड दीज पार्टीशंस और उन पार्टीशंस के पहले 2 रिकॉर्ड्स हम फेच कर रहे हैं. नॉट नेसेसरीली दोज विल बी द ओल्डेस्ट 2 एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी. सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो आपकी डेटा को you have to sort the data within those partitions in
असेंडिंग ऑर्डर ऑफ योर एम्प्लॉय आईडीज, करेक्ट? तो ही आपके पहले दो जो होंगे वो मिनिमम 2 एम्प्लॉय आईडीज होंगे, एंड उसके लिए यू कैन ऐड दिस ऑर्डर बाय क्लॉज एज वेल इन योर inside your over clause, and now your query is actually complete. तो हमने ओल्डेस्ट 2 एम्प्लॉइज यहाँ पे फेच किए हैं जिन्होंने कंपनी को ज्वाइन किया है फ्रॉम ईच ऑफ द डिपार्टमेंट्स वी हैव. Okay, so this over clause can have 2 clauses within it. One is your partition by clause, जो कि actually help करता है to define a partition of data, define a criteria to create partitions of the data, and then you can have this order by clause also to sort the data within partitions. Okay, so these 2 clauses you can have it within your over clause to. One is to define a partition and other is to sort the data within those partitions. Okay, so scenarios like these we can solve easily with the help of window functions, correct? So if you observe, the syntax is very similar. मैक्स सैलरी ओवर एंड पार्टीशन बाय हमने किया, वैसे ही यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रो नंबर ओवर एंड पार्टीशन बाय. देन वी जस्ट सॉ one more thing over here, that is your order by clause with an over clause. Okay, so we will see, okay, other 4 window functions tomorrow. Syntax is going to remain almost same, but we will understand the functionality of all of them, and then we will see how to get the data from your database to a data frame. Database से data frame में data को कैसे लेके आना है, and then we will start with the MongoDB thing. Okay, anyone have any questions here? Any questions, anyone? मॅडम खूप फास्ट झाला आजचं, काही समजलंच नाही जास्त. Sorry, 100 काय स्टुडंट पैकी फक्त 50 स्टुडंटनीच लेक्चर केलंय, जरा जास्त हे होते, फास्ट होतं. डोक्यावरून गेलं मॅडम सगळं. येस मॅम, हे लास्टला जे होतं ना ते डोक्यावरून गेलं. उद्या पुन्हा एकदा प्लीज रिपीट करून देणार. हा ठीक आहे, चालेल. आपण उद्या परत विंडो फंक्शन्स फ्रेश स्टार्ट करूया. सब क्वेरीज समजल्यात सगळ्यांना? येस मॅम. ठीक आहे, उद्या आपण विंडो फंक्शन्स परत स्टार्ट करू, नो प्रॉब्लेम. ओके, थँक यू एव्हरीवन, गुड नाईट. ओके, गुड नाईट. गुड नाईट.